is that? Okay, so last we had done up to what question number? क्या दिया था मैंने? Question number 15 or 14? I think 15. Did we do 16? Oh no. नहीं सर, लास्ट 15 15 किया था सर. Last 15 किया था. 15 yes. Okay. Last 15 किया था. Okay. So let's come over now to one of the toughest questions that we have, or tricky one. That is question number 17. Question number 17. Okay, I'm on question number 17. A ship arrives port with a forward draft. So initial drafts, okay. So this is my initial condition. A ship arrives port with forward 7 meters, aft 10 meters. So ये मेरे initial condition के drafts हो. HF is 0. HF is 0. So notice length not given in the question. I've told you about it. Right? आपकी आवाज बंद हो गई यानी. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. Okay. So HF is 0. Length is not given. You know how to handle that? Length is not given in the question. HF is 0. MCTC is 220. TPC is 25. The max permissible draft to cross a bar at the dock entrance is 9 meters. इसका क्या मतलब हुआ?
Max permissible draft to cross a bar at the dock entrance is 9 meters. What does this mean? 9 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते अपन अपना ड्राफ्ट ना फॉरवर्ड ना राइट तो कौन सा वाला ये बता रहा है आपको कौन सा ड्राफ्ट बता रहा है ये Hydrostatic. नो आई नीड अ बेटर आंसर Mean draft. Wrong. The max permissible draft to cross a bar at the dock entrance is 9 meters. Sir, final draft. Final which one? Final which one? So after. Sir, maximum final either forward or aft. इसमें कौन सा होना चाहिए? Sir, aft one because forward Sir, के लिए aft. 7 मीटर दे रखा है पहले से. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट फॉरवर्ड पहले से ही 7 दिया हुआ है सो द मैक्सिमम आफ ड्राफ्ट फाइनल कंडीशन आफ ड्राफ्ट इज 9 meters. ये समझ में आया कि नहीं? यस सर So 10 will become 9 basically. 7 को 9 नहीं बनाना. So 10 will become 9. That means the max final condition of draft is 9. Next he says, due to a damaged forepeak, the forward draft is not to exceed 7 meters. What does this mean? So forward में loading नहीं कर सकते 4 peak में. Forward shall not exceed 7 meters, come what may, because forepeak damaged है. तो इसलिए मैं फॉरवर्ड में जो भी कुछ करूं मेरा आगे का ड्राफ्ट 7 मीटर नहीं बढ़ना चाहिए 7 मीटर पे ही अटक जाना चाहिए सो फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्गो टू डिस्चार्ज इनटू बार्जेस सो डिस्चार्जिंग मिनिमम क्वांटिटी टू डिस्चार्ज in the barges. And this discharging has to be done from 2 locations. Number 2 twin deck, whose HG is 30 forward, uski location. And number 4 twin deck, uski HG 50 aft. So discharging हो रही है. इन दोनों से डिस्चार्ज करना है कितना डिस्चार्ज करें ताकि both the conditions are satisfied. Which are both the conditions? Forward draft 7, aft draft 9. ये condition है. So is the question understood? So we have arrived, the vessel has arrived at this anchorage. The vessel has arrived at anchorage at a draft of 7 and 10. Now she has to go inside the docks. So she just can't enter in because there is a draft restriction in the port. 7 because of the ship, 9 because of the port. So at the anchorage, we need to lighten the ship. Now this is an added cost. So obviously we will discharge only minimum because this is an added cost to the vessel. So how much should we discharge overall? Then how much should we discharge from number 2 and how much should we discharge from number 4? So 3 things to be found out. This is the question. Okay, is that okay? So minus rise because I'm discharging. So minus rise. Then a certain TF and a certain TA. And I will get my final drafts. Now 7, if I'm doing minus rise, then I will be doing a plus TF to make it 7 again. Is that okay with everybody?
Yes, sir. 7 से शुरू हुआ, माइनस राइज हुआ, then plus TF हो जाएगा, and I will be back at 7. Copied? Copied? Yes, sir. तो अगर TF Yes, का साइन sir. प्लस है तो TA का साइन क्या होगा? माइनस. Is this okay? Yes, sir. All right. So अब मेरे को यहां से एक इक्वेशन मिल जाती है. ये एक इक्वेशन मिल गई मुझे. ये इक्वेशन क्या कहती है? 10 माइनस राइज माइनस TA इज इक्वल टू 9. ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. सारे सेंटीमीटर्स को एक साइड कर दो, मीटर को एक साइड कर दो. इन दोनों को उधर ले जाता हूं. R प्लस TA इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 मीटर. अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इज दिस ओके? Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rise is W upon TPC. Plus TA is TC into LCF and upon LBP. When HF is 0, TA will be equal to half of TC. Do you agree to this statement? Yes, sir. W upon TPC plus half of TC. Because LCF will be L by 2, L by 2 by L. L cancel हो जाएगा. Agreed? Or you want me to show it? I can show it to you. L by 2 divided by L. L cancels. Is equal to 100. W upon TPC 25 plus half TC. TC is trimming moment upon MCTC is equal to 100. I'm going in a complicated direction. Let me simplify it. And this is because I'm going in a W unknown है and trimming moment मेरा unknown है. 2 unknown चले जाएंगे. ये complicate हो गई है equation. Let me simplify it. I am given initial drafts and I am given final drafts, right? Question मुझे hint दे रहा है. Find the minimum quantity to discharge. So let me focus on this first. पहले मैं minimum quantity निकालूंगा ताकि मेरा W मुझे मिल जाए. तो ये मेरे को आसान हो जाएगा. So let me focus on this first. So initial hydrostatic draft. What is the formula? Draft aft minus correction. Correction is trim
into LCF upon LBP. Initial draft aft 10. Initial trim 3 meters into L by 2. LCF is L by 2 divided by L. LL cancels. 10 minus 1.5. Initial hydrostatic draft 8.5. Final hydrostatic draft. Final draft aft minus final trim into LCF upon LBP. Eight meters. Initial hydrostatic draft difference final hydrostatic draft gives me what? The mean rise. Absolutely right. So mean rise is equal to how much? Zero point 0.50. Is equal to, convert to centimeter. So mean rise is 50 centimeters. Correct? Agreed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. But 50 is equal to W upon TPC. TPC is 25. So how much is W? 1250. दैट मीन्स अगर मैं 1250 टन का टोटल कार्गो डिस्चार्ज कर लेता हूं एंकरेज पे, तो मेरे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट्स ओके हो जाते हैं टू गेट इन, बट दे आर नॉट ओके एज येट बिकॉज ऑफ द ट्रिम. बट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट्स हैव बिकम ओके. नाउ आई हैव टू मैनेज द ट्रिम. सो नाउ आई एंटर इनटू दिस इक्वेशन, ये वाली. सो इस इक्वेशन में जस्ट इरेज दिस, इसको मैंने कॉम्प्लिकेट बना दिया था, इसको सिंप्लीफाई करता हूं. Rise is 50. 50 plus TA is equal to 100. So TA is equal to how much? 50. But I know TA is equal to half TC. So half TC is equal to 50. इसको अगर ये समझ नहीं आया हाफ टीसी कैसे आया, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. टीसी इंटू एल बाई 2 डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 50. टीसी इज इक्वल टू 100. But TC is equal to trimming moment upon MCTC. So trimming moment is equal to 220 into 100 is equal to 22,000 TM by what?
by head. Correct. Why? Sir, TF positive है and TA negative है. Correct. Absolutely right. Because TF positive है, बाव नीचे जा रहा है. फिर therefore trimming moment will be by head. यहां तक कोई डाउट? Any doubt? बोलो भाई. तो चलो आगे चलते हैं. अब ट्रिमिंग मोमेंट टेबल बनाते हैं. Weights discharged. First column is remarks. Weights discharged. Lever, that is GF. Trimming moment. Head. Stern. Number 2 twin deck. Number 4 twin deck. Let us discharge X tons from number 2 twin deck. Then number 4 twin deck will be 1250 minus X. क्योंकि टोटल 1250 होना चाहिए. X का लीवर will be what? HF is 0. So the lever will be 30 only. Number 4 twin deck का लीवर will be 50. अब मैं नंबर 2 ट्विन डेक फॉरवर्ड से डिस्चार्ज कर रहा हूं, तो ये मुझे कौन सा ट्रिमिंग मोमेंट देगा? Sir, stern. बिल्कुल. सो हेड विल बी डैश, स्टर्न विल बी 30x. ये समझ में आया? क्रूशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दूसरा वाला मैं पीछे से डिस्चार्ज कर रहा हूं, आफ्ट से, तो वो मुझे हेड ट्रिमिंग मोमेंट देगा. 50 इंटू 1250 माइनस एक्स. Stern will be nil. Next crucial part of the question. Final trimming moment will be what? The head minus turn. Correct. Why? So trimming movement by head आया था. That's right. Because हमारा final trimming moment by head आया था 22,000. Therefore, it will be head minus stern. अगर ये stern होता, then it would have been stern minus head. Is that okay? So head minus stern. और ये मुझे देगा by head. और इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 22,000 के साथ. Solve for x. And therefore 1250 minus x. So 506.3 tons. 506. 0.3 tons. ओके. और दूसरा वाला So
So 743.7 tons. Okay, so this is your answer. That means आगे से मुझे 506 डिस्चार्ज करना है और पीछे से मुझे 743 डिस्चार्ज करना है, तो मेरे फाइनल ड्राफ्ट्स फॉरवर्ड 7 एंड आफ्ट 9 हो जाएंगे. दैट्स हाउ. ठीक है, इज दैट ओके? Is that okay? Any doubts? No, sir. All right. Question number 20. A ship leaves port, so her initial drafts on departure are forward 9 meters and aft 9.8 meters. Length 170 meters. MCTC 160. TPC 24. HF 1 meter forward. And on the passage, she consumes the following. So consumption. So 520 tons HFO from number 2 dB HG 50 forward. 200 tons HFO from number 8 dB HG 60 aft. And this is all consumption means discharge. And 300 tons of fresh water from number 3 dB HG 30 forward. How much fresh water must be transferred between the peak tanks? Between the peak tanks. कहां से कहां ये नहीं पता हमें. 4 peak to aft peak या aft peak to 4 peak ये नहीं पता. 150 meter apart. D 150 meter apart. To bring this trim to 0.3 meters by stern. Final trim 0.3 meter by stern चाहिए मुझे. And state the final draft forward and aft. ये फाइनल ट्रिम हमें पता है और ट्रांसफर कितना करें और कहां से करें ये नहीं पता. So let us start. Initial trim 0.8 meters stern.
Final trim, 0.3 meters turn. Difference of the two fellows gives me what? TC. So TC will be how much? Initial 0.8 stern, final 0.3 stern. हाँ जी, TC कितना? 50 centimeter ahead. 50 centimeter ahead. Is this okay with everybody? So TC is equal to trimming moment upon MCTC is equal to 50. Therefore, trimming moment is equal to 160 into 50, 8000 TM by head. Is this okay with everybody? Now we make trimming moment table. Remarks, weights discharge. Lever, which is nothing but GF. Trimming moment, head, stern. Number 2 tweed deck. 520 ton. Lever, 50 forward, HF 1 meter forward. So difference of the two. Lever will be 49. $520 into 49 कितना आता है? Two five four eight zero. ये कहाँ पे आएगा? हेड में आएगा, स्टर्न में आएगा? मैं आगे से डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आगे से कंज्यूम कर रहा हूँ. Stern में आएगा. स्टर्न में आएगा. कितना बोला था? 24 सर 25480. 25480 25480. मैं बिकॉज मैं आगे से डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो ये स्टर्न में जा रहा है, बिकॉज ये मुझे स्टर्न, माय ट्रम विल गो आफ्ट. देन आई एम कमिंग टू नंबर 8 dB. ये नंबर 2 dB था, ट्विन डेक नहीं था. नंबर 2 DBT, ये नंबर 8 DBT. 200 टन मैंने कंज्यूम किया. 60 aft, 1 forward. So lever will become 61. Correct? 12200. और ये Head. मुझे हेड देगा 12200. Is this okay with everybody? यस सर. Now we come to number 3 DBT. 300 tons of fresh water. 30 forward, 1 forward. So 29. 29 into 300. कितना आता है?
8700. 8700 और ये मैं आगे से Half डिस्चार्ज कर रहा हूँ, stun. ये मुझे स्टर्न देगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके ये मेरी इंटरमीडिएट स्टेज है, मेरा टोटल ट्रिमिंग मोमेंट ये वाला 12200 है, ये वाला टोटल मेरा कितना आ रहा है? 34180. 34180. So at this stage, my vessel has got a stern trimming moment more than head. Agreed? Yes, sir. At this stage, my stern trimming moment is more than head. I want final trimming moment to be by head. So therefore, I should be transferring from where to where? Aft peak to forward peak. Forward. Correct. तो मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम आफ्ट पीक टू फोर पीक टैंक। कितना करना है? W टन्स। व्हाट इज द डिस्टेंस? लीवर 150। This will give me a head trimming moment, which will be 150 W या X कर लो, एक ही बात है। Do you agree on this? Yes. Therefore, final trimming moment will be 12200 plus 150 W minus 34180, and this whole thing should be equal to 8000 by head. Both are head. This is also head. Agreed? तभी ये पॉसिबल है। अगर मैं आफ्ट पीक से फोर पीक जाऊंगा तभी मेरा हेड ट्रिमिंग मोमेंट होगा, तभी मेरे फाइनल मुझे हेड चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व फॉर डब्ल्यू। Sir, 199.86. 199.86. So many tons. This is your answer. ये समझ में आया? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, ये वाला पार्ट सारा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दिस इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द होल क्वेश्चन which you have to decipher कि मेरी up till this stage, up till the consumption, मेरी stern trimming moment ज्यादा थी, मुझे तो फाइनल हेड चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं आप पीछे से आगे ट्रांसफर करूंगा, तो आफ्ट पीक टू फोर पीक करूंगा और वो मेरे को हेड ट्रिमिंग मोमेंट देगा, तो वो हेड में जाएगा। और फिर जो इसका फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट का जो एक नटशेल आएगी, वो दैट शुड बी इक्वल टू 8000 बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है, इज दैट ओके? These are the trickiest questions of the whole exercise.
All right. Homework ले लो. Please do question number 16, 18, 19, 16, 18, 19 and solved example 7a. Solved example 7a. Solved examples हमारे मेथड से करना जो हम कर रहे हैं क्लास में, जैसे फॉर्मूला लिख के वगैरह वगैरह. शॉर्टकट कोई नहीं मत मारना. इक्वेशन बनाना जैसे कर रहे हैं हम, इक्वेशन बना रहे हैं, हर बार इक्वेशन बना रहे हैं. So follow that procedure. ठीक है. All right. चलो. See you then. All right. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Okay.